Hello everyone, welcome to Ekoching. So in this video, we will be looking at the actual CAT questions of logical reasoning. So before watching this video, just make sure that you have watched every other video of logical reasoning. So in the same topic, we have seen fundamental chapters such as directions, blood relations, series, coding, decoding, arrangement, right? So just make sure that you have watched every video before this one so that you can make the most of this video. Now in this video, we will be looking at actual CAT questions of LRDI section and that too logical reasoning questions, right? So in this video, we will be looking at CAT 2017 paper and we will be going through the logical reasoning questions. We'll be solving them together, right? So please make sure that you have a notepad with you, you have a pen with you and you are ready for a journey of learning, right? So without wasting any more time, let's start with the set 1. So the set 1 is on the screen. So I will be getting out of the screen, okay? Now I want you to spend a couple of minutes here. Read the data. What is it telling you? Just make sure that you note every important thing, every important point in your notepad. Take 2 to 3 minutes, spend with this data, just understand what it is saying, and then we will be going to the questions. So pause the video. Understand the data, resume after you are done. Alright, so I hope by now you have spent appropriate amount of time with this data and you've understood what are you supposed to do, right? So this data does not give you much, right? So obviously the questions will have separate conditions, the question will have separate situations, right? So let us go to question number 1. If the underlying principle is to be satisfied in such a way that the journey between any two cities can be performed using only direct, that is non-stop flights, then the minimum number of direct flights to be scheduled is what? Right? Your options are 45, 90, 180 and 135, right? So this is kind of an easy question, right? So I want to give you about 2 to 3 minutes maximum. So 2 minutes is what I want to give you. But for those who might need some extra time, take 3 minutes. So pause the video for 2 minutes, try to solve it on your own. This is an easy one, right? And resume after you have marked your answer. Okay, so I hope by now you have marked your answer and that was question 1. It was an easy one, right? Nothing difficult here. Let us go to question number 2. It looks lengthy, right? Suppose 3 of the 10 cities are to be developed as hubs. A hub is a city which is connected with every other city by direct flights each way, both in the morning as well as in the evening. The only direct flights which will be scheduled are originating and or terminating in one of these hubs. Then the minimum number of direct flights that need to be scheduled so that the underlying principle of the airline to serve all the 10 cities is met without visiting more than one hub during one trip is what? So once again, I would not say this is easy. I would say this is easy to moderate, more or less inclining towards moderate. Okay. So I want to give you about 3 minutes to solve this question. So take 3 minutes, pause the video for 3 minutes. I will get out of the screen. Pause the video for 3 minutes. Try to solve it on your own and mark your answer and then resume the video. Alright, so I hope by now you have tried to solve this question and you have marked your answer. The options were 54, 120, 96, 60. So I hope you have marked one of them and I hope you have marked it correctly. Let us go to question number 3. Okay, so this question is as lengthy as the data itself, right? Suppose the 10 cities are divided into 4 distinct groups, G1, G2, G3 and G4, having 3, 3, 2 and 2 cities respectively. And that G1 consists of cities named A, B and C. देखो G1 में बोल दिया है A, B and C है. Further, suppose that direct flights are allowed only between 2 cities satisfying one of the following. Okay, so we've got some conditions. Both cities are in G1. So you can have direct flights if they are in G1. Then between A and any city in G2, between B and any city in G3, between C and any city in G4. Interesting. Then the minimum number of direct flights that satisfies the underlying principle of the airline is what? And it's a theta question. I would want to give you 3 minutes once again to solve this question, right? So pause the video for 3 minutes, try to solve it under the time pressure and then resume after you are done.
All right, so I hope by now you are done and you have marked your answer, right? So this was a moderate level question, right? Not difficult, not easy, but yes, moderate. Let me go to question number 4. Again, the data, the condition which was present in previous question is exactly the same, right? Suppose 10 cities are divided into 4 distinct groups, G1, G2, G3, G4, having 3, 3, 2, 2 cities respectively, and that G1 consists of cities named A, B, and C. Further, suppose that direct flights are allowed only between 2 cities satisfying one of the following. So we've got the same 4 conditions. Both the cities are in G1, or between A and any city in G2, or between B and any city in G3, or between C and any city in G4. However, this is the new part. However, due to operational difficulties at A, it was later decided that the only flights that would operate at A would be those to and from B. Cities in G2 would have to be assigned to G3 or G4. Okay. What would be the maximum reduction in the number of direct flights as compared to the situation before the operational difficulties arose? So once again, a little complicated, right? The level of difficulty is moderate. I would want to give you about 4 minutes to solve this one. So take 4 minutes, pause the video, try to solve it on your own and resume after you are done. Alright, so that was question 4, which was the last question of this set. Now this was an interesting set. I hope you have been able to mark your answer correctly. And it was a theta question, so just make sure that you have written your answer somewhere in the notepad so that you can verify it when we solve it together, right? So let me go to the data and let's try to solve it together. Okay, what has been given? A new airlines company is planning to start operations in a country. The company has identified 10 different cities which they plan to connect through their network to start with. So there are 10 cities that they want to work with. Okay. Now, the flight duration between any pair of cities will be less than 1 hour. देखिए ये important. Flight duration between any pair of cities will be less than 1 hour. मतलब basically short duration वाली flights हैं ये सारी के सारे, है ना? To start operations, the company has to decide on a daily schedule. Okay. The underlying principle that they are working on is the following. देखो underlying principle question से आपको याद होगा कि बहुत बार इसका जिक्र हुआ है, right? So underlying principle क्या है वो पढ़ लीजिए आप. क्या है? Any person staying in any of these 10 cities should be able to make a trip to any other city in the morning and should be able to return by the evening of the same day. Okay, should be able to return by the evening. This is the underlying principle. Okay, let's say if I am at city A, so first of all, if I have to visit city B, there should be a flight in the morning and there should be a return flight in the evening, again from the city B to city A. Okay, that is what they want to say in the underlying principle, right? What is the underlying principle? That let's say this is city A, this is city B. So there should be one flight in the morning, let's say this is AM time, morning time, one flight from A to B and one flight from B to A, right? Similarly, one flight from A to B in the evening and one flight from B to A. This is what they want to say in the underlying principle. That means between any two cities, A and B, there should be 4 flights. 2 in the morning, 2 in the evening. So 2 in the morning and 2 in the evening. There should be 4 flights between any two cities. And this is the underlying principle. What is the underlying principle? That between any two cities, X and Y, there should be 4 flights. This is the underlying principle. Right? Okay, with this data, let me get into the question. If the underlying principle is to be satisfied in such a way that journey between any two cities can be performed using only one direct flight, then the minimum number of direct flights to be scheduled is what? Okay. First of all, we know that minimum number of direct flights between any two cities is 4. Minimum number, na? 2 सुबह,
दोनों सिटीज से सुबह, एक यहाँ से वहां, एक वहां से यहाँ, एक A to B, एक दूसरा B to A, एंड वही सेम चीज शाम को भी. So 4 flights होनी चाहिए. Okay, that means now ultimately the point comes down to in how many ways can we have a pair of cities out of 10, right? So in how many ways can we select 2 cities out of 10 cities? The answer is given by permutation and combination. और यहाँ पर अपन को चाहिए combination. The answer is 10C2. What is 10C2? 10C2 is nothing but 10 into 9 by 2. That is 45. इसका मतलब है 45 pairs बना सकते हैं हम लोग. हर पेयर को 4 फ्लाइट चाहिए. So आंसर क्या आएगा? 45 into 4, that is 180. So 180 is the answer C. Right? Easy to moderate question. More inclining towards easy side, I would say. है ना? आंसर इज 180. अच्छा क्वेश्चन था, काफी अच्छा क्वेश्चन था, बट देन ये क्वेश्चन सॉल्व करके आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ जाना चाहिए कि अच्छा द रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस कैसे रहेंगे, आपको किस लाइन में सोचना पड़ेगा. आपको ये समझ में आ गया कि 2 सिटी के बीच में 4 फ्लाइट होनी चाहिए, 2 सुबह को 2 शाम को. ये समझ में आ गया तो बस खत्म है पूरा क्वेश्चन. दैट वाज क्वेश्चन 1. क्वेश्चन 2 पे चलते हैं. ओके, डेटा बड़ा है, अच्छे ध्यान से पढ़ते हैं. सपोज 3 of the 10 cities are to be developed as hubs. ओके, सो मान लो कि ये A एक हब है, ये B एक हब है और ये C एक हब है. These are hubs. Okay, a hub is a city which is connected with every other city by direct flights each way, both in the morning as well as in the evening. इसका मतलब ये हब, हर एक हब बाकी सारे मतलब कितने, 10 में से 3 निकल गए, 7 सिटीज. मतलब ये A भी 7 सिटीज से कनेक्टेड है, ये B भी 7 सिटीज से कनेक्टेड है और ये C भी बाकी के 7 सिटीज से कनेक्टेड है. ओके, the only direct flights which will be scheduled are originating and or terminating in one of the hubs. मतलब हब से ओरिजिनेट हो और हब से ही टर्मिनेट हो, वही फ्लाइट आप शेड्यूल कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल ABC हब है, राइट. मान लो दूसरे 2 सिटीज हैं D एंड D, तो आप इनके बीच में फ्लाइट्स नहीं कर सकते, आप इनके बीच में फ्लाइट्स नहीं कर सकते, राइट. सो फ्लाइट सिर्फ हो सकती है हब से स्टार्ट हो रही है या तो हब पे एंड हो रही है, वही फ्लाइट आप रख सकते हो. Then the minimum number of direct flights that need to be scheduled so that the underlying principle of the airline to serve all the 10 cities is met without visiting more than one hub during one trip is what? सेम चीज है, अंडरलाइन प्रिंसिपल की बात करनी है. अंडरलाइन प्रिंसिपल क्या बोलता है? एक सिटी और दूसरे सिटी के बीच में 4 फ्लाइट होनी चाहिए बॉस, बस दैट्स इट. ओके, तो अब हमें क्या समझना है? चलिए, अगर मैं हब से 7 सिटी की बात करूं, लेट्स से एक ये हब है. ओके, सो हब के साथ जुड़ा हुआ है लेट्स से D, E, F, G, H, I एंड J. ये 7 सिटी हैं जो हब के साथ जुड़े हुए हैं, राइट. दैट मीन्स 4 फ्लाइट इसकी, 4 फ्लाइट इसकी. जैसे फॉर एग्जांपल A एंड D की 4 फ्लाइट्स, A एंड E की 4 फ्लाइट्स, A एंड F की 4 फ्लाइट्स, A एंड G की 4 फ्लाइट्स, A एंड H की 4 फ्लाइट्स, A एंड I की 4 फ्लाइट्स, A एंड J की 4 फ्लाइट्स. मतलब बेसिकली कितने फ्लाइट्स हो गए? 28 फ्लाइट्स एक हब की. सो 28 फ्लाइट्स इसकी, 28 फ्लाइट्स इसकी, 28 फ्लाइट्स इसकी, राइट. 28 फ्लाइट्स हब्स की होंगी. ओके, एक और चीज, हब से आप दूसरे हब भी तो जा सकते हो. सो A एंड B भी जा सकते हो, A एंड C जा सकते हो, B एंड C जा सकते हो, राइट. सो 28 28 28 हो गया. 28 into 3, 28 into 3 कितना हो जाएगा? 84. Similarly, between hubs, so AB 4 फ्लाइट्स, AC 4 फ्लाइट्स, BC 4 फ्लाइट्स, तो टोटल 12 फ्लाइट्स. इसका मतलब फाइनल आंसर कितना होगा? 28 plus 28 plus 28, हब के साथ बाकी सारे सिटीज वैसे 28 और ये 12. So 28 28 28, that is 84 84 and 12, 96 flights.
एंड 96 यस, ऑप्शन सी, राइट, मॉडरेट लेवल क्वेश्चन। बहुत डिफिकल्ट नहीं था बिकॉज देयर वर ओनली अ फ्यू वेरिएबल्स विच वर इन्वॉल्व्ड, बट आसान भी नहीं था, बहुत इजी भी नहीं था। होता क्या कि अगर आप लेट्स से ये 20 20 28 कर लिया, 84 आ गया, बट देन 84 तो ऑप्शन में ही नहीं है, तो आपको कुछ ना कुछ करके 96 या 120 तक पहुंचना पड़ेगा। और अगर आपको ये दिमाग में क्लिक नहीं हुआ कि हब्स के बिटवीन की फ्लाइट्स भी कैलकुलेट करनी है, तो आप फिर वहीं पे क्वेश्चन छोड़ दोगे, आप डर जाओगे कि नहीं, कुछ गलत करे उससे अच्छा है कुछ ना करे तो बेहतर है। इसका मतलब जो टाइम आपने स्पेंड किया है इसके ऊपर 3 मिनट, वो वेस्ट हो जाएगा, है ना। तो दैट वाज क्वेश्चन 2, अगेन बहुत अच्छा क्वेश्चन था, राइट। क्वेश्चन 3 पे आते हैं। ओके, क्वेश्चन 3 में अपना कुछ नया डेटा है। क्या डेटा है? सपोज द 10 cities are divided into 4 distinct groups G1, G2, G3, G4 having 3, 3, 2, 2 cities respectively and G1 consists of city A, B, C। अच्छा, तो देखिए लेट्स से ये G1 है, G1, G2, G4, सॉरी G3 एंड G4। G1 में कौन कौन है? G1 में 3 सिटी, G2 में 3 सिटी, G3 में 2 सिटी और G4 में 2 सिटी। ओके, G1 में ABC है, ये दे ही दिया है ABC। ओके, G2 में 3 सिटी है तो मान लेते हैं कि ये DEF HI FG सॉरी GH IG, रैंडमली मैंने नाम लिख दिए हैं, दैट्स इट। ओके, अब वो लोग क्या बोल रहे हैं कि फर्दर सपोज दैट डायरेक्ट फ्लाइट्स आर अलाउड ओनली बिटवीन 2 सिटीज सैटिस्फाइंग वन ऑफ द फॉलोइंग, मतलब ये कंडीशंस हैं। चलिए, बोथ सिटीज आर इन G1, अगर दोनों सिटी G1 में होंगे तो फ्लाइट आप कर पाओगे। इसका मतलब AB के बीच में फ्लाइट्स होंगी, BC के बीच में फ्लाइट्स होंगी और AC के बीच में फ्लाइट्स होंगी। मतलब कितनी? 4 + 4 + 4 12। इसकी फ्लाइट्स हो जाएंगी 12, 4 + 4 + 4 12, सो ये 12 आ गया। ओके, बिटवीन A एंड एनी सिटी इन G2, A एंड एनी सिटी इन G2, देखिए ये A और D की फ्लाइट्स, A एंड E की फ्लाइट्स, A एंड F की फ्लाइट्स, कितनी हो गई? अगेन 4 + 4 + 4, सो 12। यहां पर भी 12। Between B and any city in G3, B and any city in G3 मतलब basically BG, BH, so 4 + 4 8, and so यहां पर आएगा 8। Between C and any city in G4, C and any city in G4, so once again C के साथ I एंड C के साथ J, 4 + 4 सो 8, दैट्स इट। इतनी ही फ्लाइट्स आप कर सकते हो। तो ये कितना सम हो गया? 12 + 12 24, 24 एंड 16 40 फ्लाइट्स। मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्ट फ्लाइट्स दैट सैटिस्फाई द अंडरलाइंग प्रिंसिपल इज 40, राइट। आई वुड नॉट से दिस वाज डिफिकल्ट एट ऑल, बिल्कुल नहीं। ये डिफिकल्ट क्वेश्चन को मैं नहीं मान सकता हूं। क्वेश्चन मैनेजेबल ही था, क्वेश्चन आसान ही था, बस अंडरलाइन प्रिंसिपल समझ में आने चाहिए कि कहां से कहां तक की फ्लाइट अलाउ कर सकते हैं, दैट्स इट। एक बार अगर आप ये ग्रुप्स बना देते हो G1, G2, G3, G4, अगर आप अज्यूम कर लेते हो नंबर, तो बस बहुत आसान हो जाता है ये विजुअलाइज करना, राइट। प्लीज लर्न हाउ टू विजुअलाइज। जैसे आप डेटा पढ़ते हो, पेपर में उस डेटा को छापना शुरू कर दो, whatever you can do। आपको अगर लगता है कि ग्रुप्स ऐसे बना देने से चीजें मेरे लिए आसान हो जाएंगी, तो डू दैट, प्लीज डू दैट, बिकॉज इट विल हेल्प यू इन विजुअलाइजिंग द डेटा, इज विजुअलाइजिंग कि कहां से कहां आपको अलाउ है फ्लाइट बनाना, राइट, इन दिस केस। सो दैट वाज क्वेश्चन 3, अगेन नॉट एट ऑल डिफिकल्ट, बस यस हाँ मॉडरेट कह सकते हैं, जस्ट बिकॉज जो लेंथ है वो, अदरवाइज अगर आप इन सबको हटा दो, आसान भाषा में ये आसान ही क्वेश्चन था। अगर लैंग्वेज को इजी कर देता तो इजी ही बन जाता, है ना। बस उन्होंने क्वेश्चन को डरावना बना दिया, दैट्स इट।
And now let's go to question 3. Sorry, question 3 answer is 40. Let's go to question 4. यहां तक सब कुछ सेम है ना? देख लीजिए एक बार, अगर कुछ भी माइन्यूट चेंज है तो नोट कर लीजिए. Suppose 10 cities are divided into 4 distinct groups, G1, G2, G3, G4, having 3, 3, 2, 2 cities respectively. That G1 consists of cities named A, B, and C. Further, suppose that direct flights are allowed only between 2 cities satisfying one of the following. क्या सीन है? Both cities G1, both A and any city in G2, B and any city in G3, C and any city in G4. अब तक सब कुछ सेम है. अब तक सब कुछ सेम है. इसका मतलब ये हुआ कि 40 फ्लाइट्स पॉसिबल है. 40 फ्लाइट्स पॉसिबल है, राइट? पिछले क्वेश्चन में देखा आपने 40 आंसर था, यही सेम चीज था. G1, G2, G3, G4, 40 फ्लाइट्स. ठीक है, ओके. बट देन देयर आर सम कंडीशंस. क्या कंडीशन है? However, due to operational difficulties at A, it was later decided that only flights that would operate at A would be those to and from B. So basically, अगर आप A से फ्लाइट ले रहे हो तो वो सिर्फ B के साथ हो सकती है. इसका मतलब A की फ्लाइट C के साथ नहीं हो सकती और A की फ्लाइट एनी अदर 7 सिटीज उसके साथ भी नहीं हो सकती. यहां भी नहीं हो सकती, है ना? ए की फ्लाइट सी के साथ नहीं हो सकती और ए की फ्लाइट एनी अदर सिटी के साथ नहीं हो सकती. ठीक है, ओके. व्हाट वुड बी द मैक्सिमम रिडक्शन इन द नंबर ऑफ डायरेक्ट फ्लाइट्स एज कंपेयर टू सिचुएशन? अच्छा, हमने एक चीज भूल दिया, ये चीज रह गया. सिटीज इन G2 वुड हैव टू बी असाइन्ड टू G3 और G4. सो ये G2 वाले सारे सिटी कहां चले जाएंगे? G3 या G4 में चले जाएंगे. ओके, G3 या G4 में चले जाएंगे. तो नाउ थिंक अबाउट इट. देखिए, सॉरी, या क्वेश्चन, ओके. तो ये अपना है G1, ये है G2, ये है G3 और ये है G4. वो लोग क्या बोल रहे हैं कि अब आप A के साथ बस B की फ्लाइट कर सकते हो. सो A, B एंड C. तो अब A के साथ B की फ्लाइट ही होगी. सो A के साथ B की फ्लाइट मतलब ये 4 फ्लाइट. B के साथ C की फ्लाइट हो सकती है, वो 4 फ्लाइट. बट A एंड C की फ्लाइट नहीं हो सकती. A एंड C की फ्लाइट नहीं हो सकती. ये हुआ डन. दूसरा चीज वो लोग क्या बोल रहे हैं कि सिटीज इन G2, जो यहाँ पर 3 सिटीज थे D, E, F, वुड हैव टू बी असाइन्ड टू G3 और G4. इन सबको या तो इधर आपको असाइन करना पड़ेगा बॉस. तो एक काम करते हैं, D और E को यहां ले आते हैं. तो D, E, और यहां पर ऑलरेडी कौन थे? G, H. E, F को यहां, सॉरी, F को यहां ले आते हैं, F, I, J. सो अब इनको मैं हटा देता हूं. बेसिकली G2 चला ही गया, G2 था ही नहीं, ऐसा मान लीजिए. ओके, अब देखिए, अभी तक 8 फ्लाइट हुई. चलो, फ्लाइट्स और कौन सी हो सकती है? फ्लाइट्स ये हमने गिन लिया. ए के साथ G2, तो ए के साथ तो फ्लाइट ही नहीं हो सकती, तो नो फ्लाइट्स, 0. यहाँ पर 8 फ्लाइट. बिटवीन B एंड एनी सिटी इन G3. चलो, B एंड G3, सो ये 4, दूसरी 4 और दूसरी 4, कितनी हो गई? 16. 4 + 4 + 4 + 4. सो यहाँ पर मैं आंसर लिख रहा हूँ. पहले आया था 8, उसके बाद 16. ओके, सो यहाँ पर आ गया 16. ओके, बिटवीन C एंड एनी सिटी इन G4. C एंड एनी सिटी इन G4, तो C के साथ गिनिए आप फ्लाइट. चलिए, लेट्स से C के साथ ये F, सिमिलरली C के साथ I एंड C के साथ J. तो 4 + 4 + 4, 12. इतनी फ्लाइट्स पॉसिबल हैं. सम कर दीजिए इसका. 24 एंड 12, 36. मतलब अगर ए वाला जो एयरपोर्ट है वो खराब हो जाता है तो आप 36 फ्लाइट्स रख सकते हो. क्वेश्चन क्या है? व्हाट वुड बी द मैक्सिमम रिडक्शन इन द नंबर ऑफ फ्लाइट्स एज कंपेयर टू द सिचुएशन बिफोर ऑपरेशन डिफिकल्टी? बिफोर कितना था? 40 फ्लाइट्स. अभी कितना है? 36 फ्लाइट्स. सो व्हाट इज द रिडक्शन? 40 - 36 इज नथिंग बट 4. 4 फ्लाइट का रिडक्शन है. 4 इज द आंसर. थोड़ा सा ट्रिकी, आई वुड से, थोड़ा सा ट्रिकी. आई वुड स्टिल नॉट से डिफिकल्ट, बट थोड़ा सा ट्रिकी था. करेक्ट? आपको ध्यान देना पड़ेगा कि भाई रिडक्शन कितना हो रहा है.
36, अगर मान लो सब कुछ सही किया बट फिर 36 आंसर लिख के आ गए, गलत, बिकॉज यू डिड नॉट रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन डिड नॉट आस्क हाउ मेनी फ्लाइट्स आर पॉसिबल नाउ, द क्वेश्चन आस्क कितनी फ्लाइट्स कम हो जाएंगी, व्हाट विल बी द रिडक्शन इन द फ्लाइट्स, दैट वाज द क्वेश्चन, राइट. सो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, काफी अच्छा क्वेश्चन था. जस्ट रिसोर्स एलोकेशन, राइट. दिस वाज मोर ऑफ अ मैनेजमेंट प्रॉब्लम, राइट. दिस वाज मोर ऑफ अ मैनेजमेंट प्रॉब्लम, शेड्यूल प्रॉब्लम, राइट. सो ऑपरेशंस जब आप पढ़ेंगे, ऑपरेशंस मैनेजमेंट, सो वहां पर आप शेड्यूलिंग पढ़ेंगे. सो दिस इज जस्ट अ शेड्यूलिंग प्रॉब्लम, राइट. ओके, असाइनमेंट प्रॉब्लम भी इसको बोल सकते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग में. ओके, जो आप आगे बढ़ेंगे, बट देन अभी के लिए इतना इनफ है. चलिए, दैट वाज सेट नंबर 1 फ्रॉम कैट 2017 पेपर. अच्छा सेट था, आई वुड से नॉट वेरी इजी बट इजी टू मॉडरेट के लेवल पे था. इसका मतलब अटेम्प्ट करना चाहिए. यू शुड गिव इट अबाउट 8 to 10 minutes and it will give you at least 3 or 4 correct answers, right?